Welcome to another session of QHSE concepts, and in this time I have brought in front of you the CSWIP 3.1 chapter 4 destructive testing. I had made this a long, very long 1 hour video on this, but then I found that mic had some problems, so the entire volume went away and I was left with only a video. So naturally I'll have to reshoot this. Second part of the video came nice. There are some videos I am attaching with this. I think I have taken tensile test video and Charpy test video so that it can be helpful for you guys to understand what are these tests all about, because I am understanding that this course is taken by mechanical engineering and other guys who are not want to enter into this field, but to increase the knowledge you are taking the course. So in that case, what will happen is you will not know what is going on in the industry and what are going on inside the companies that are fabricating the large structures, who are doing very, very big work, large work like Aramco projects or let's say vessels. So we are a company which is doing a very huge structural works. So naturally we thought that it is best to give such knowledge to the people who are young in this field, and also who are working professionals in this field. They can see the video just to brush the brush up on your CSWIP knowledge. So let's go ahead with the destructive chapter, destructive testing, chapter of destructive testing. So what happens when does destructive testing come into play? So I have made another video on this on how the welding engineer will provide the information required for destructive testing to the lab by a piece of paper called as testing request. So the welding engineer knows which tests are to be carried out for as per which specification. So he will actually make a test request and send to him also, and procurement also, so that they can make the cost and also pay for this. And then this is having a revision number so that you can even revise this. So you should see the other video also with respect to this video. It will improve your knowledge even further. So I'll go ahead with the destructive testing. So as you know that PQR is welded specimen, and then it goes to the lab for testing. There either they will do both the NDT tests, which is the RT test they will do, and MPI if it is required. Usually high hardness MPI better to be done, and then you will do the quantitative tests, and then you will do the qualitative tests. So all these 3 tests are done on PQR. If anyone asks you, you can say first they will do non-destructive test, then they will do quantitative test, and then they will do qualitative test. So all these 3 tests reports are attached with any PQR. So European welding standard requires the test coupon made for welding procedure qualification test, which is PQR, to be subjected to non-destructive and destructive testing. Tests are called destructive testing because welded joint is completely destroyed. ये पूरा का पूरा जॉइंट जो है ये कट करके इसका जो सैंपल्स बनाने के बाद ये जॉइंट का कुछ भी बचता नहीं है, इसके लिए इसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं. सो ऑल द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट्स आर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स. So mechanical tests are quantitative because quantity is measured. So there is the very important word, and a mechanical properties such as tensile test and hardness and impact toughness. ये सब tests हमको करना है so that we will find the values of our welding PQR. So welded joint का जो PQR value है वो और parent material का properties ये slight match होना चाहिए, कि नहीं तो आपको same properties नहीं मिलेगा throughout your project. So आप अगर जैकेट बना रहा है या डेक बना रहा है या आप लैडर या कुछ भी फैब्रिकेट कर रहा है, तो उसका फैब्रिकेशन में आपको मटेरियल लगता है. वेल्डिंग का जो सामान है, लाइक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड लगता है, वेल्डिंग कंज्यूमेबल लगता है, ये लगता है. सो आप जब एक 2 पीस को वेल्ड करेगा तो उसका जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए सेम होना चाहिए कि पेरेंट मटेरियल जैसा. सो इसीलिए ये पर्टिकुलर टेस्ट PQR करता है. और ये डिज़ाइनर का जो व्हेन डिज़ाइनर स्टार्ट करता है प्रोजेक्ट को
डिज़ाइन करने के लिए, तो उसका जो कैलकुलेशन है पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, लोड, स्ट्रेस, लोड बियरिंग, नॉन लोड बियरिंग, कैंटिलीवर, ये सब का जो लोड जहाँ वो सोचता है कि कैलकुलेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से जॉइंट डिज़ाइन होता है, उसके हिसाब से ग्रेड ऑफ मटेरियल भी चूज करता है वो। So he wants to see whether the during the fabrication हम लोग जो PQR यूज करता है उसमें जो क्वालिटीज एंड होना चाहिए, मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ये वो पहले से ही निर्धारित होना चाहिए और उसी के हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट चलना चाहिए। सारे वेल्डर्स ने वही PQR WPS देख के ही काम करना चाहिए। Then we will get something called as standardization. So that standardization is very critical in this because don't forget ये structure, ये जैकेट, ये टैग ऑफशोर में जाके इंस्टॉल होने वाला है, जहाँ पे जो पानी का वेव्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत करंट फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होता है करंट का। तो ये अब सोचना चाहिए कि कोई भी मटेरियल ब्रिटल फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए और वो नीचे गिर नहीं जाना चाहिए। सो पीपल्स लाइफ्स आर देयर, सो लोगों का जो जिंदगी है इसके लिए एक साथ खेलना मुनासिब नहीं है। इसीलिए ये सब डिज़ाइनर ये सोच के ही डिज़ाइन करता है और हमको एज ए वेल्डिंग इंस्पेक्टर ये सोचना चाहिए कि जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया हुआ है उसके हिसाब से जो WPS और PQR डिज़ाइन किया हुआ है वेल्डिंग इंजीनियर ने वही इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर समझो हम लोग ये काम नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो ऑफशोर में ज़्यादा दिन तक वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। अगर सारा वेल्डर अपना मनमानी करके बियॉन्ड करंट रेंज एंड वोल्टेज रेंज मार के आपको किसी की तरह से वेल्डिंग करवा के और आप भी एनडीटी में 2 नंबरी करके किसी भी तरह ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है मुझे, ये सोच के अगर काम करेगा तो आगे जाके ये जो है बहुत ही जल्दी नीचे टूट के गिर जाएगा या कोई ब्रिज है तो टूट जाएगा और इसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है ये पूरा आपका टीम के ऊपर आएगा। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दिस डिस्ट्रक्टिव टेस्ट चैप्टर इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो आगे बढ़ते हैं ये इतना समरी के साथ। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट आर यूज्ड टू बाय material manufacturer supplied by various plates, pipes, forgings and have minimum property value specified for particular grades. So MTC में ऑलरेडी जो मैकेनिकल टेस्ट प्रॉपर्टीज दिया हुआ है उसी को हम लोग रीटेस्ट करते हैं ड्यूरिंग PQR। कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं इसमें। डिजाइन इंजीनियर यूजुअली use minimum values listed in the particular grades of material as basis for design. तो अगर वो 70 KSI का मटेरियल है तो नेचुरली ये S355 55 KSI मटेरियल है तो नेचुरली वो जो डिज़ाइनर है वो कंसिडर करेगा कि इतना स्ट्रेस अलाउड है ये एरिया में, तो वो मटेरियल चूज करेगा। फिर वो इसके हिसाब से वो PQR भी होना चाहिए और उसका भी मटेरियल प्रॉपर्टीज सेम आना चाहिए। सो लेट्स सी, आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा ये वीडियो के बाद कि क्या होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड कहाँ यूज होता है और उसका क्या वैल्यू है अपना पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो ये जो है वेल्डेड जॉइंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑफ बेस मेटल। सो यही हमको इंश्योर करना है PQR करके। तो क्वांटिटेटिव मैकेनिकल टेस्ट आर कैरिड आउट for welding procedure qualification and are intended to demonstrate that joint properties satisfy design requirements. तो हम लोग यही कर रहे हैं यहाँ पे, joint property जो है वो डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, यही हमको चेक करना है by various tests. The emphasis in the following subsections is on the destructive test and test method used widely. तो ये जो अभी आने वाला चैप्टर है इसमें यही हम लोग पढ़ेंगे। तो एक वन बाय वन टेस्ट को देख लेते हैं। ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट। और अगर ये क्यों ट्रांसवर्स लिखा गया है कि क्योंकि ये जो हम लोग ने वेल्डिंग टेस्ट कूपन वेल्डिंग किया है, ये आपने अगर प्लेट किया होगा, पाइप किया होगा, तो ये जो टेस्ट का सैंपल लेता है ये ट्रांसवर्स लेता है वेल्डेड जॉइंट से। और फिर स्पेसिफिकेशन में कोड्स एंड स्टैंडर्ड में ये भी लिखा रहता है कि कहाँ से लेना है और ये चैप्टर के लास्ट में उन्होंने ये कवर किया है। सो आप लास्ट तक बने रहिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या स्पेसिफिकेशन यूज़ करना है। सो टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हर टेस्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज रिक्वायर ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट टू बी टू शो दैट स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट सेटिस्फाइड डिज़ाइन क्राइटेरिया। सो जैसे मैंने आपको कहा कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको मिलता है ये टेस्ट करके, ये टेस्ट में हमको जो वैल्यूज़ मिलता है वो वैल्यू
जॉइंट का जो मतलब वेल्डिंग का जो वैल्यू है वो डिजाइन के क्राइटेरिया को मैच करना चाहिए। तो ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन पीस टिपिकल ऑफ टाइप ऑफ यूरोपियन वेल्डिंग स्टैंडर्ड इज शोन। सो स्टैंडर्ड 895 वो डायमेंशन स्पेसिफाई करता है कि ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट का पीस का कि कहाँ से लेना है और वेल्ड मेटल कैसे रिमूव करना है, कैसे उसको मशीनिंग करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो पीस था वेल्डेड कूपन प्लेट, या ये पाइप भी हो सकता है। तो इसका ये जो वेल्डिंग जॉइंट है और ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है। तो इसने एग्जैक्टली सेंटर से जो टेस्ट स्पेसिमेन लिया है, आप ये टेस्ट स्पेसिमेन देख सकता है, ये हमारा जॉइंट है, वेल्डिंग जॉइंट। और अगर आपने ये टेस्ट स्पेसिमेन देखा होगा तो बहुत अच्छी तरह से वो नज़र आता है कि ये जो हाँ ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट है। टेंसाइल में इतना नज़र नहीं आता है, बट दूसरे टेस्ट आप मैक्रोग्राफ में जाएगा तो बहुत ही क्लियरली नज़र आएगा। The test piece may be machined to represent the full thickness of the joint, but for very thick joint, it may be necessary to take several tensile specimen. तो आप कोई भी लैब में जाएगा मैकेनिकल टेस्टिंग करने वाला, तो आपको उधर नजर आएगा उसके पास लेथ मशीन रहता है, मशीनिंग का, और सॉ कटिंग मशीन रहता है, बहुत सारा इक्विपमेंट उसमें रहता है, क्योंकि उसको स्पेसिमेन वो वेल्डेड जॉइंट से बनाना पड़ता है, वो आपको रेडीली अवेलेबल नहीं होता है। तो वो करने के लिए उसके पास मशीनिस्ट रहता है, उसके पास मैकेनिकल टेक्नीशियंस रहता है जो आईटीआई क्वालिफाइड हो सकता है या बाय एक्सपीरियंस वो उस लाइन में आया होगा। तो ये स्पेसिमेन अगर समझो हमने हमारा जो वेल्डेड स्पेसिमेन है टेस्ट कूपन का 120 mm है या बहुत 100 mm है, तो उसको वेरियस लेयर्स में वो कट करके स्पेसिमेन बनाएगा। So test specimen are accurately measured before testing, then fitted into the jaws of tensile testing machine and subjected to continually increasing tensile force until the specimen fractures। जैसा आप ये वीडियो में देख रहा है कि ये कैसे ये जो स्पेसिमेन है इस तरह से इस दोनों जॉ में फंसा के इसको फिर दोनों डायरेक्शन में पुल करता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ RM is calculated by dividing maximum load by the cross sectional area of the test specimen measured before the testing। तो ये जो टेस्ट से पहले ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मेजर करता है, बाद में इसको हम लोग लोड के साथ डिवाइड कर देते हैं। So the test is intended to measure the tensile strength of the joint and thereby show a basis of design. So base material properties remain the valid criterion। क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरिया। तो बेस मेटल का जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है यही हमारा क्राइटेरिया बन जाता है फॉर एनालाइजिंग दिस डेटा ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो टेस्ट हमने किया उसमें जो हमको वैल्यूज मिला। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा? सो टेस्ट पीस ब्रेक्स इन द वेल्ड मेटल। अगर ये टेस्ट पीस वेल्ड मेटल में ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है हमको फिर भी वो एक्सेप्ट होगा, प्रोवाइडेड तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो मटेरियल स्ट्रेंथ से भी हाई होगा, थोड़ा बहुत या थोड़ा बहुत कम होगा, बट वो मटेरियल स्ट्रेंथ को मैच करना चाहिए। तो इज नॉट लेस देन द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड in the material certificate। So in minimum which is usually minimum specified for the base metal material grade। So material grade का जो MTC है, ये MTC में जो मिनिमम स्पेसिफाई किया होता है तो इससे भी कम नहीं होना चाहिए हो। तो आप ASME सेक्शन 9 में अगर देखेगा, इफ द टेस्ट स्पेसिमेन ब्रेक्स आउटसाइड द वेल्ड और इन फ्यूजन जोन at a stress above 95% of the minimum base material strength, test result is still acceptable। तो अगर ये फ्यूजन लाइन में फेल हो गया वेल्ड हीट अफेक्टेड जोन में, और ये अगर स्ट्रेस 95% ऑफ द मिनिमम बेस मेटल है फिर भी चलेगा, वो पास हो जाता है। चलो देखते हैं ऑल वेल्ड टेंसाइल टेस्ट क्या होता है। So on occasion it is necessary to measure the weld metal strength as a part of welding procedure qualification, particularly for elevated temperature design। So the test is to measure tensile strength and also yield proof strength and tensile ductility। तो ये सब हमको ये टेस्ट में मेजर करना है। तो ऑल वेल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ ये ऑल वेल्ड जो टेस्ट है ये हमको कहाँ करना पड़ता है? कई बार क्या होता है कि हम लोग जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल सिलेक्ट करता है, दैट वेल्डिंग कंज्यूमेबल इफ इट इज नॉट DNV टाइप अप्रूव्ड और ABS टाइप अप्रूव्ड and your project is having ABS or DNV specification or let's say Lloyd's specification,
in all their specification it is written that the welding consumable should have type approval. So if type approval it is not there, then he will tell you that welding type approval you have to do, and in that you have to do all weld tensile. So आप एक joint welding joint करके भेज देगा, और भेजने के बाद स्पेसिमेन जो सिलेक्ट करते हैं वो all areas से सिलेक्ट करके they will do the test and then they will witnessed by the third party. थर्ड पार्टी मतलब वही थर्ड पार्टी डीएनवी ही आना पड़ेगा. अगर आपका प्रोजेक्ट डीएनवी है तो डीएनवी का आके तो ये विटनेस करना पड़ेगा. जब ये विटनेस हो जाता है तो फिर आपका ये ऑल वेल्ड टेंसाइल पास होने के बाद आप इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट में. सो दैट इज व्हाई ऑल वेल्ड टेंसाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. सो ऑल वेल्ड टेंसाइल के लिए जो स्पेसिमेन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आप ये देख सकते हैं. ये सर्कुलर स्पेसिमेन है, ये फ्लैट स्पेसिमेन नहीं है, ये राउंडेड है. तो इसको मशीन किया जाता है बाकायदा. और कैसे लेता है, इफ यू कैन सी ये जो जॉइंट है तो पूरा का पूरा जो जॉइंट का लेंथ है वो लेंथ के हिसाब से इसको सिलेक्ट करता है, नॉट ट्रांसवर्स, पर ये लॉन्जिट्यूडनली डिसाइड सिलेक्ट करता है ये स्पेसिमेन. तो मशीन फ्रॉम वेल्ड पैरेलल विद देयर लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. आपको पता होगा कोई भी जॉइंट का देखा जाएगा तो आपको लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस मालूम होना चाहिए. Now in this case अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है. तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से आपने एक बार ले लिया और बाद में यहाँ पे गेज लेंथ आपने ये डिसाइड किया और ये मार्क कर दिया. इसके ऊपर क्लिपर लगा हुआ रहता है while टेस्टिंग, सो दैट व्हेन द इलोंगेशन इज हैपनिंग, क्योंकि ये यहाँ से पुल होगा, ये यहाँ से पुल होगा, ये पुल होने के बाद ये गेज लेंथ बढ़ता जाएगा और फाइनली वो ब्रेक हो जाएगा. इस तरह यहाँ पे जिस तरह ये ब्रेक हो गया है वो ब्रेक हो जाएगा और बाद में हमको गेज लेंथ का आइडिया आ जाएगा कितना गेज लेंथ हुआ है. तो उसके हिसाब से हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चलता है. सो मेथड क्या है, कैसा करते हैं. सो स्पेसिमेन आर सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग फोर्स इन द सेम वे दैट ट्रांसवर्स टेंसाइल स्ट्रेस. जिस तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट किया है पहले फर्स्ट में, इसको भी वैसे ही करते हैं, मशीन के जिग में डाल के इसको पुल करते हैं. सो यील्ड और प्रूफ स्ट्रेस आर मेजर्ड बाय एक्सटेंसोमीटर अटैच्ड टू द पैरेलल लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन. सो ये जो उन्होंने नॉच बनाया है, नॉच के साथ जो क्लिपर अरेंज किया लगा हुआ होता है वो उसको इट मेजर्स दैट वन. सो एक्यूरेटली मेजर्स द एक्सटेंशन ऑफ गेज लेंथ ऑफ द लोड इज इंक्रीज्ड. एंड द लोड इंक्रीज होता है तो ये गेज लेंथ भी मेजर करता जाता है और वो ग्राफ बनते जाता है कंप्यूटर में. टिपिकल लोड एक्सटेंशन कर्व्स एंड देयर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन बिलो. सो फॉर एग्जांपल ये जो चार्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही चार्ट बनता है आपका हर एक मटेरियल का टेस्टिंग के बाद. तो ऐसा क्यों होता है कि हर एक मटेरियल टेस्ट करने के बाद सेम ग्राफ बनता है. तो ये सब स्टील का जो प्रॉपर्टी है ऑफ डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, आई मीन ये जो ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, ये सब मटेरियल का प्रॉपर्टी है. सो व्हेन यू स्टार्ट द लोड टेस्ट बाय पुटिंग दैट इन द जिग, you will see the graph is continuing to rise because ये आपको लोड इंक्रीज हो रहा है. जब लोड इंक्रीज हो रहा है मतलब ये जो पुलिंग आप कर रहे हैं इसको आप लोड बोलना चाहिए. जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं यार ये बहुत लोड ले रहा है ये आदमी, इतना लोड मत ले, मतलब वो बोलता है हमारे टेंशन आ गया तेरे को, बहुत लोड ले रहा है तो थोड़ा लोड कम ले. तो ये उसी वहीं से ये आया हुआ है, ये इसी टेस्ट से ये लोड आया हुआ है शब्द. तो ये जोक उसी शब्द से आया हुआ. सो ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे लोड बढ़ते जाता है और यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, मतलब अगर यहाँ से आपने लोड को स्विच ऑफ कर दिया वो मशीन को तो ये स्पेसिमेन जो है दोबारा अपनी जगह पे चला जाएगा. बट क्या होएगा अगर इलास्टिक लिमिट के बाद भी आप अगर पुल करेगा तो ये अपर यील्ड पॉइंट पे पहुंचेगा और फिर यहाँ से वो मटेरियल दोबारा अपने जगह पे नहीं जाएगा. इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं. और ये अपर यील्ड पॉइंट पहुंचने के बाद ये ग्राफ नीचे जाएगा और बाद में अल्टीमेटली ये इस तरह से टूट जाएगा. तो ये पूरा का पूरा टेस्ट है और इसका वीडियो भी आप चल रहा है तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्या टेस्ट हो रहा है. तो परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ गेज लेंथ ये फाइंड आउट करना है हमको. ये जो आप दिख रहा है ये इनिशियल है, ये बहुत छोटा है और ये कभी कभी ये बड़ी लेंथ बहुत बढ़ जाता है. हमेशा ये लेंथ बढ़ेगा ही, कम कभी नहीं होगा.
तो परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर. सो ये जो एरिया में फ्रैक्चर अब हुआ है, इसमें जितना भी कम हो जाता है उतना आपका मटेरियल अगर ज़्यादा है तो स्ट्रांग है, और अगर ये एकदम कम होते होते टूट जाता है तो आपका मटेरियल बहुत स्ट्रांग है. पर अगर ये थिकनेस के इतना थिकनेस में ही अगर टूट रहा है कहीं और गेज लेंथ भी बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब आपका मटेरियल ब्रिटल है, और इसका मतलब आपने वेल्डिंग पैरामीटर्स वेल्डिंग करने के टाइम पे ठीक से नहीं किया. तो कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? चेंज इन द लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, सिंपल मिलीमीटर्स में इनटू 100 एज अ परसेंटेज आपको ये मिलेगा. तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस कैसे कैलकुलेट है? लोड बाय दैट circumference of this cross reduction area CSA by is equal to ultimate tensile strength. तो ये अगर इसको आप डिवाइड किया लोड बाय द एरिया विच इज गॉन डाउन, देन मेजर करके तो आपको यूटीएस मिल जाएगा. So everybody must be thinking that the destructive testing PQR, there is a lot of videos on this CSWIP topic. So what is missing in many people's explanation is that the whole story starts from proposal department, or let's say business development, who is bringing the project. So they will first contact the welding engineer of quality department and then ask that check the MTO and tell us how many PQRs are going to be done in this project. So every designer, when they design the structure or piping or anything, they will also give a MTO. MTO is called as material takeoff. In this material takeoff is like an Excel file. In this you will find what materials are used in the project, the entire thickness range of, and also the grades which are involved in the project. So along with the material grade and the thickness, the welding engineer wants to do and along with the specification, he will find out how many PQRs are really required in the project. So if for example more PQRs are required, then he will make first, this is the initial revision 1, and he will decide in this how many PQRs are required. So it will be arrested there, and when the project starts, if there is a MTO revision comes, so MTO revision comes 2, 3, many times it will come. So during that time, if there any material is increased, he has to keep on checking this. So he will check that, oh, the new material grade has been introduced and a new thickness range is there, then he need to change the, he need to make new PQR for that. So this new PQR, when he will make, he will say that this is the initial revision 1 during the project start time. So any new change in that, the change management is, अगर आपने मेरा change management का वीडियो देखा नहीं है तो change management का वीडियो आप देखिए. In that, the change management means the welding engineer will inform the proposal or his project department that when the project started, the revision 1 of MTO, I had understood and cleared only 15 PQRs. Now I have to do 5 more PQRs. That means this is extra money we need to get from the client, and this is very, very critical and important. आप ऐसा नहीं है कि वेल्डिंग इंजीनियर का काम है PQR बनाते जाएगा. He should also think about the company's cost. जो आपने कॉस्ट में प्रोजेक्ट लिया था वो 15 PQR का कॉस्ट में लिया था, बाद में ये बढ़ते जाएगा, तो आपको MTO का रिवीजन से ही पता चलता है. तो ये मैंने सोचा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक पे बताना, इसलिए मैंने ये ऐड कर रहा हूँ इसके साथ. Okay, let's start the chapter on a subsection of chapter 4 on Charpy test. Charpy test, as you say, is a very important test to find the toughness of the material. Now, usually this is Amitabh Bachchan of all the tests, so it has a very good fan following for this Charpy test. Just because I can show you why. The reason is the way it is conducted is completely fun to watch. So you can see that when the specimen is made, the specimen will be immersed in the bath and liquid nitrogen is poured. And I can see here how the liquid nitrogen gets poured. From the beginning. Okay, here we are. So you will see this
in front of you if you are witnessing this test, and it is cooled to minus whatever degrees you want, minus 45. And just before doing that, accurate samples are checked, dimensions are checked, marking is checked. Only then it is slowly immersed inside the chamber, this bath. You can see he is doing only 3. Usually there is a set of 4. So 4 times for 12 samples. So then the nitrogen is poured, liquid nitrogen is poured, which itself is at minus 192 degrees. So once it is poured, it's allowed to cool a bit. You have a timer in your hand, temperature gauge. So this temperature will tell you at what temperature the bath is right now. So once it is at your desired temperature, then you simply have to take your tongs. You should not lift it by hand, bare hands, and then we have to put it in the anvil. Just forward this. This is the machine. So he will put it in the anvil. This is the indicator. This is the hammer. You can see the hammer, when it went up, it created a degree value here. That is the value we are trying to measure. So we will keep the. So this is the top setting. This is the 0 setting on the other side. Let's forward this and see. So that's where we are. Hammer goes and hits the impact specimen, and then your joules are seen here. He is keeping the sample now from the anvil, and that's where he cut it. And just a little bit this portion, he is keeping it now, then releasing the hammer. Then the hammer will simply break, and you must have seen how the specimen broke here half, and he got the value here. So somebody will be recording this. Same way he has to do for all the specimens. I thank Mr. Junior LL Physica Mechanical Limbu for this video. So that's how the entire operation is done. So let's come back to our course material. So that test is internationally tested method for assessing the resistance to brittle fracture by measuring the energy to initiate the propagate the crack from sharp notch in a standard sized specimen subjected to impact load. So what will be done? A V notch will be created and it will be broken to check how tough the material is. The design engineer need to ensure toughness of the steel for the use of particular item will be sufficient to avoid brittle fracture. Now what happens in the offshore is when we have the structure is working, so we want the material to be tough. What is the meaning of tough is that the material, when some load is constantly acting on it, and there are so many loads on offshore, it's a cyclic load area. For example, there are waves from all the direction, the winds, and then there is a bad sea, rough sea, which we call. That time the waves become even more dangerous. Then there is all kinds of load already acting on the structure. For example, you are doing a lot of refining work, or let's say gas to oil separation, or you are doing some oil to gas separation, sorry. Then you are doing so many work there, so naturally the load will be acting on that. Maybe you are lifting with a crane something. So during this, what we want is that if there is any excessive load as per beyond the designer's calculation, then the structure should not completely brittly break. So it should not break like a stick. Stick को आप bend करेगा तो वो bend रहता नहीं है, वो एक टाइम के बाद एकदम खटक से टूट जाता है. So अगर आप इमेजिन करो हमारा स्टील भी एक बेंड होते होते एक खटक करके टूट गया, तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म नीचे पानी में गिर जाएगा और बहुत सारा लाइफ ऑफ सी लाइफ सर्वाइवल वाला लाइफ चला जाएगा. तो इसको हमें
we want to avoid this situation. So what we want is that toughness of the material should be very good. So to avoid, to understand that toughness only, we are doing this test. So carbon, manganese and low alloy steel undergo a sharp change in their resistance to brittle fracture as their temperature is lowered, so that steel may have very good toughness at ambient temperature but show extreme brittleness at sub-zero temperature. So for example, अगर आप ये चार्ट देखेगा, नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर में स्टील का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल होगा, उसमें अच्छा टफनेस वैल्यू मिलेगा. बट व्हाट हैपेंस इफ इट गोज टू -40, -20, -45, तब ये स्टील कैसे बिहेव करेगा ये हमको पता नहीं चलता है. सो ये टेस्ट, ये कंडीशंस को मिमिक करने का एकमात्र टेस्ट है. सो अगर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन जेल डाल के अगर स्पेसिमेन को कूल करते हैं -45 तक, तब हम लोग ये ब्रिटल फ्रैक्चर या डक्टाइल फ्रैक्चर का ट्रांजिशन पॉइंट देख पाएगा. और यही हमको देखना है कि ये मटेरियल सब-0 डिग्रीज में कैसे बिहेव करता है, इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्राफ. So the transition temperature is defined as temperature midway between upper shelf and lower shelf. In the above transition temperature is -20. तो अगर आप -20 के ये साइड में आ जाएगा, माइनस साइड में, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एस कर्व बना है, ये एस कर्व का मिड पॉइंट आता है यहाँ पे डक्टाइल और ब्रिटल ट्रांजिशन में. तो -20 डिग्री के बाद ही हमको चेक कर सकता है मटेरियल कैसे बिहेव करता है. और बहुत सारा टेस्ट -10 में भी होता है. सो डजंट मीन दैट वो फिर उसमें जूल्स आपको ज़्यादा मिलना चाहिए. सो हम लोग बहुत बार क्लाइंट को देखा है कि वो बोलता है मिनिमम 28 जूल मुझे चाहिए ये एक्सपेरिमेंट में. आगे देखते हैं. तो द स्पेसिमेन को कैसे प्रिपेयर करते हैं. ये स्पेसिमेन इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड है, तो बहुत सारा स्टैंडर्ड्स में आपको सेम नज़र आएगा. सो 10 into 7.5 mm और 10 into 5 mm का सैंपल बनता है विद अ वी नॉच. ये जो नॉच है यही चारपी नॉच है. 0.25 mm का इसका ये जो रेडियस है और 45 डिग्री का लेवल है. तो इसका सैंपल कहाँ से लिया जाता है. 3 जगह से इसका सैंपल, 4 जगह से लिया जाएगा. वेल्ड सेंटर लाइन, फ्यूजन लाइन, +2 mm और +5 mm. ये स्टैंडर्ड PQ और चारपी टेस्ट का ये स्टैंडर्ड 4 सैंपल है. और ये 4 सैंपल, 3 सैंपल्स लिया जाता है बेवल, सेंटर लाइन और रूट साइड से. इसीलिए लगभग 12 स्पेसिमेन हो जाता है ये. और इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं डबल V जॉइंट है और इसने 3 जगह से लिया हुआ है. So let's come to the machine itself. You have already seen the hammer, how it acts, and how when it goes up, it creates the indicator here in terms of joules. So ये जो scale है, ये joule scale है. When he kept the specimen in the anvil and released the hammer, hammer went and struck the specimen and broke from the V notch. That's what happened, and then he got the reading here. So that's what is written here. That's how you have to do it. So when it breaks, either it breaks completely or it will break in a crystalline manner. So you can see this crystal behavior. So बहुत बार ये crystal देख के भी समझता है कि ये अगर आपको कम जूल्स मिलेगा, 15 जूल या 20 जूल, तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा रहेगा, ग्रेन साइज. और अगर आपको बहुत अच्छा जूल्स मिलता है, 28 के ऊपर मिलता है, तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यूजुअली बहुत ही फाइन ग्रेन होता है. सो द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द हैमर व्हेन इट स्ट्राइक्स द स्पेसिमेन इज शोन by the position of the hammer pointer on the scale of the machine. Energy values is given in joules. So यही है उसका explanation है basically. इसका acceptance criteria क्या होगा. अगर ये जो नॉच, ये जो स्पेसिमेन है, ये अगर पिचक के टूट गया, पिचकना मतलब क्या, ऐसा हो जाना, डिफॉर्म. सो लेट्स सी दिस टेस्ट. सो यहाँ से तो जैसा
जैसे कि हमने देखा कि द स्पेसिमेन व्हेन ही ब्रेक्स द हैमर, releases the hammer, it breaks the specimen kept in the anvil and we get a reading here. And then what happens is there are two conditions. If the material will break and you will not get any joules, maybe you will get 5 joules or 10 joules if your welding parameters are not controlled, and if you will get a very good joules above 25, above 28 or 30. So when you get such a very good result, what will happen is your specimen will when you get a very high result, your specimen will bend like this from the back side. And when you don't get any good result, it simply breaks. That means it will remain square. So you can see when you get a very good, why it is having like this deformation is because it has taken the complete load of the hammer. And then while breaking, it has actually resisted the break and also it has got deformed. So this is what we want ideally in a structure. It's also written here, specimen that exhibits very good toughness will show only a small degree of crack extension without fracture and high value of lateral expansion. So ये actually lateral expansion हुआ है और ये ductile fracture हुआ है. डक्टाइल फ्रैक्चर हमको चाहिए, ब्रिटल फ्रैक्चर हमको नहीं चाहिए. ब्रिटल फ्रैक्चर हुआ तो इसका मतलब है मटेरियल में आप जो वेल्डिंग का जो आपका पैरामीटर्स है इसमें आपको बराबर से आपने वेल्डिंग किया नहीं. तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा कि ये इसमें जो हमको नज़र आता है क्रिस्टलिनिटी, ये क्रिस्टलिनिटी एकदम अच्छा ग्रेन साइज होना चाहिए और ये आप रिपोर्ट में भी डाल सकते हैं. ऐसा उसने लिखा है कि ईच टेस्ट रिजल्ट इज रिकॉर्डेड इन एन एवरेज वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर द सेट ऑफ 3 सेट्स. जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो 4 टेस्ट है इसमें 3-3 स्पेसिमेन वो करता है तो 12 टेस्ट हो गया, तो उसका एवरेज रिजल्ट लेता है हम लोग हमेशा. आफ्टर इम्पैक्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ 3 स्पेसिमेन प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स में बी एडेड टू द टेस्ट रिपोर्ट. सो इनका जो टफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनका ये बल्क डिफॉर्मेशन है, ये आप ऐड कर सकता है रिपोर्ट में. बट बहुत बार मैंने देखा है कि सिर्फ रिजल्ट्स का जो वैल्यू है वही काफ़ी होता है. अगर आपको 25 के ऊपर 28 के ऊपर बेसिकली मिला तो इसका कहने का मतलब रहता है कि बहुत ही अच्छा स्पेसिमेन है और वेल्डिंग एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है. So percentage crystallinity of the fracture face that has the crystalline appearance which indicates brittle fracture. 100% indicates completely brittle fracture. So इसका जो क्रिस्टल है, ये अगर लार्ज क्रिस्टल होगा तो इसका मतलब ये ब्रिटल टूटा है, और अगर एकदम फाइन ग्रेन होगा इसका मतलब ये अच्छी तरह से डक्टाइल फ्रैक्चर है. Lateral expansion is increase in the width of the back of the specimen behind the notch as indicated below. The larger the value, the tougher the specimen. ये मैंने आपको already describe किया. स्पेसिमेन दैट एग्जिबिट्स, ये भी हम लोग देख चुका है कि अगर ये क्लीन ब्रेक हो गया तो वो ब्रिटल है, और अगर ये पूरी डिफिकल्टली वो ब्रेक हुआ इसका मतलब वो टफ है. तो इसके पीछे का राज जान लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों आपको ये टफनेस इम्प्रूव मिलना चाहिए, अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए. कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिल जाएगा समझो अगर आपने, और यही राज है, ये राज ही किसी ने डिस्कस नहीं किया है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे, और QHSE कंसेप्ट पे ही आप सुन पा रहे हैं. देखो, अगर आपने वेल्डिंग प्रोसीजर बनाने के टाइम पे, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन बनाने के टाइम पे, PQR बनाने के टाइम पे, अगर वेल्डर का वोल्टेज, एम्पियर, ट्रैवल स्पीड जो चेक नहीं किया है हर एक पास में, तो आपको क्या लगता है ये आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. समझो वेल्डर ने, वेल्डिंग इंजीनियर ने बोल दिया ये PQR करना है और ये इसका मतलब लार्जली पैरामीटर्स है, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये इसका मटेरियल है, फिटअप कर दो, वेल्डिंग कर दो कल, और कोई विटनेस आ जाएगा, क्लाइंट या थर्ड पार्टी आएगा. तो इन्होंने शुरू कर दिया. अभी थर्ड पार्टी का क्या है, थर्ड पार्टी तो आता है जाता है, तो अगर उसका भी ध्यान वहाँ नहीं है तो हमको कैसे हमको अच्छा क्वालिटी का PQR मिलेगा. तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि इसके लिए हम लोग एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर वहाँ पे रखता है, और उसका क्या काम रहता है, उसका यही काम रहता है कि जब वेल्डर ने शुरू किया वहाँ से लेके वेल्डिंग खत्म होने तक
वो इंस्पेक्टर वो जगह से हिलेगा नहीं। अगर हिलेगा तो वेल्डर अगर कम बंद करेगा तो ही वो बंद करेगा। तो ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर वहाँ क्या करता है पूरा दिन? तो इसका ये काम है कि वेल्डिंग इंजीनियर ने जो भी वेल्डिंग प्रोसीजर दिया है वो इम्प्लीमेंट वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, ये देखने का। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो वोल्टेज है, करंट है, ट्रैवल स्पीड है, ये वो कैसे मेजर करता है? तो उसके पास एक मल्टीमीटर टाउन टेस्टर होता है, उसके पास लेजर टेम्परेचर थर्मोमीटर रहता है, उसके पास एक पूरा शीट रहता है पेपर का विथ पेन और पेंसिल और विद अ पैड, जहाँ पे वो करंट वोल्टेज बार बार मेजर करता रहता है जब वो वेल्डर वेल्डिंग करता है। तो हर बार जब वो वेल्डिंग करता है तो ये आदमी मेजर करता रहता है कि इसका ट्रैवल स्पीड कितना है, इसका हीट इनपुट कितना है। हीट इनपुट ही हमको मेजर करना होता है और वो हीट इनपुट मेजर करते करते उसको पता चलता है कि ये आदमी बराबर रेंज में वेल्डिंग कर रहा है। और ये हम लोग को तब तक करना है जब तक रूट और पास फिलिंग कैपिंग सब खत्म नहीं हो जाता है। क्योंकि आपने देखा रहेगा हर एक ट्रैवल रेंज, हर एक का ट्रैवल स्पीड अलग है। आप रूट पास में अलग स्पीड से मारेगा और एज यू गो फर्दर अलग अलग स्पीड होगा और इसका अलग अलग रेंज भी होता है वोल्टेज का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब रेंज वो चेक करता जाएगा एज ही गोज। सो ये हमको, हम लोग ये ऐसा करेगा तभी हमको ये अच्छा से टफनेस मिलेगा, वरना ये टफनेस आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा। और सीटीओडी में तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ किया आपके ट्रैवल स्पीड में और हीट इनपुट में, तो आपको चारपी जो हम लोग फ्रैक्चर टफनेस के लिए सीटीओडी करता है उसमें रिजल्ट तो मिलना नामुमकिन है। और मैंने खुद देखा है कि कैसे वो स्पेसिमेन फेल होता है और फिर हमने दोबारा किया उसको और हम लोग पास हो गया। सो ये बहुत ही महंगा टेस्ट है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ ही उसको आपको फुल नॉलेज के साथ ही इसको आगे बढ़ना है, किसी को ऐसे ही नज़रअंदाज करके नहीं करना है। सो आपको ये जो पूरा का पूरा पिक्योर प्रोसेस है इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, तब आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पास होएगा। वरना आपका कोई उम्मीद नहीं है कि टेंसाइल भले पास हो जाए वो टफनेस में फेल हो जाएगा। फिर आप सोचते रहेगा अरे मेरा टफनेस क्यों फेल हो रहा है, टेंसाइल तो पास हो रहा है। तो कभी कभी क्या होगा, टफनेस पास हो जाएगा, टेंसाइल फेल हो जाएगा। सो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। इसलिए इसको वेल्डिंग इंस्पेक्टर एक नहीं, आपको चाहे तो दो रख सकता है तो आप दो रखिए। मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग लेसन शेयर करता हूँ। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है वेल्डर का बिहेवियर। ओके, हमको एक आरामको का वेल्डिंग का टेक्नोलॉजिस्ट आया था हमारा कंपनी में और वेल्डर क्वालिफिकेशन हमने उनके सामने किया। अब वो है वेल्डिंग टेक्नोलॉजिस्ट मतलब वो पीएचडी है। और वो पीएचडी ने हमारा पूरा देखा, हमारा वेल्डिंग स्कूल देखा और वेल्डिंग स्कूल देख के वो बोला, मुझे बाहर लेके आया, बोला कि अच्छा रघु, तुम ये कर रहे हो, मैंने देखा तुम्हारा वेल्डर ठीक कर रहा है वो, ओके, बट मैंने इसको देखा कि ये इसका जो एरिया है वो क्लीन नहीं है। ये बहुत ही मेसी एरिया में वो वेल्डिंग कर रहा है, पिक्योर बना रहा है। तो अगर ये वेल्डर आज यहाँ पे अपना जगह क्लीन नहीं रखेगा तो क्या चांसेस है कि ये साइट में जाने के बाद ये वेल्डर क्या करेगा? ये वही करेगा जो आज ये वेल्डिंग का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के टाइम पे कर रहा है। तो ये जो हैबिट्स है ये उसने एकदम शार्पली फाइंड आउट किया कि देखो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। These are very important things. If this person is not doing cleanliness, he is not keeping the environment clean here, what are the chances that he will do it on the site? So he will not do it. So this is a behavioral thing. So हमें एज अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर ये बारीकी से देखना चाहिए और हमारा यही काम होता है कि ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करते रहना। कि ये ऑब्जर्व हम लोग जो बहुत सारा हैबिट घर पे छोड़ के आता है, हम लोग बोलता है कि हम लोग अपने आप को बोलता है कि जब हम लोग कंपनी का गेट में आता है तो लॉजिक और कॉमन सेंस घर पे भूल के आता है। ऐसे ही होता है बहुत बार। और ये कैसा हमको पता चलता है, आप देखिएगा छोटा छोटा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो पता चलता है कि इसमें कॉमन सेंस यूज ही नहीं किया। तो वेल्डर क्वालिफिकेशन, वेल्डर टेस्ट और ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये सब में बहुत बारीकी से जाना ज़रूरी है। और ऑब्जर्व, वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए और
अपना खुद का जो ये है उसको एक्चुअली उसको मतलब बताना चाहिए वेल्डर को कि वेल्डर तुमको क्लीन रखना है, तुमको ग्राइंडिंग अपना जॉइंट भी क्लीन रखना है, अपना आसपास का एरिया भी क्लीन रखना है और तुमको अच्छा क्वालिटी का जॉब देना है। ये चाहे इंडिया में हो, मिडिल ईस्ट में हो, सब जगह पे ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग यूजुअली इंडिया में इतना उसको ये नहीं देता है, हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता कि वेल्डर चप्पल डाल के वेल्डिंग कर रहा है या शूज डाल के वेल्डिंग कर रहा है या कैसा वेल्डिंग कर रहा है। एक्चुअली द बेसिक पीपीई बहुत ज़रूरी है वेल्डर के लिए। हम लोग वेल्डर के जान लेने के लिए नहीं वेल्डिंग करवा रहा है, बट उसको एक प्रोफेशन है उसका। सो प्रोफेशन कोई भी करता हो तो उसको रिस्पेक्टफुली अपना प्रोफेशन करते रहना चाहिए। तो ये जो मेरा तरफ से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो आप कोई भी सिर्फ प्रिपरेशन कोर्स में आपको नहीं सिखाएगा, पर आपको आपके दोस्त में ये चैनल खोला है तो आपको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा मैं। तो ये हो गया चारपी टेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग हार्डनेस टेस्ट की तरफ। तो हार्डनेस टेस्ट और मैक्रोग्राफी टेस्ट वो एक साथ करने वाला टेस्ट है। तो आप बहुत बार देखेगा कि मैक्रोग्राफ का जो मैक्रो किस तरह दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ। मैक्रोग्राफ कुछ इस तरह दिखता है। मैक्रोग्राफ जब आप लोग फाइनली वो इसको ग्राइंड करता है पॉलिश्ड पेपर के ऊपर, और बाद में आप ये जो व्हाइट स्पॉट देख रहे हैं ये हार्डनेस लिया हुआ स्पॉट्स है। तो देखते हैं ये हार्डनेस चीज क्या है। तो हार्डनेस ऑफ द मेटल इज रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने देखा है बहुत बार स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट है, रबर हार्ड है, टायर का रबर आप देखिएगा और वो हार्ड और भी हार्ड होगा। तो बाय द टाइम आप प्लास्टिक पे आता है, स्टील पे आता है, स्टील में भी हम लोग एल्यूमिनियम कम हार्डनेस है, कॉपर कम हार्डनेस है, स्टेनलेस स्टील या और स्टील पे आएगा कार्बन स्टील तो बहुत हार्ड है, और कार्बन स्टील में भी हायर ग्रेड्स है, वो 690 तक जाएगा तो वो बहुत ही हार्ड है। सो हार्डनेस का ये एक स्केल है, तो इसको हमको मेजर करना है। और कैसे हम लोग मेजर करता है यही हम लोग को ये दिखाना है। मैं आपको एक वीडियो दिखाएगा उसके लिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये बिल्कुल हमारे ज़िंदगी से मैच नहीं करता है, ये बहुत ही पुराना ड्राइंग है। ये कौन से ज़माने का ड्राइंग है। मैं चाहता हूँ CSWIP should update this drawing and they should put actual Vickers, Brinell and this hardness what we are doing here. Those specimens they have to put that machines which anyway I am going to show you the Vickers and hardness how it is carried out. This is a Vickers hardness test machine. I'm fixed. These are the loads. 50 kg is fixed here. You can consider 30 or 50. I'm considering the 50 here. Place over the platform. Here the image is appearing. Now rotating in this way in order to get image more clear with the help of elevating screw. Till it image will be get more cleared. Once you get more clear image, go for indentation. Now rotate this part. Now start the test. The dual timing is set here. It is 15-second dual time is set. Now rotate it in this way. Now there is a indentation. Indentation is occurred here. With the help of this, you have to move or you have to fix in one position here in such a way that this line has to be moved with respect to other line. This is nothing but smaller scale. Now how to read this part? See here how to read. Rotate until it touches to other end. Now how to read this? This is nothing but 0. This is 1, 2. That means 0.2 coincide will be 8. Count it will be 8. 0.286. The first reading is 0.286. Now the second reading, tilt it in this way. Tilt it vertically. Tilt it vertically. Now move the scale in such a way that one end should be fixed.
One end should be fixed. Just adjust this part in order to get more clarity. Now it is adjusted. Now see the reading here. One end has to be fixed here. Now one end is fixed here. This end is fixed. Rotate with the help of this part. The other end is fixed. Now count the value here. The value will be, first is 0, 1, 2, 0.28, 0.287, 0.287. In this way, so you saw how the machine was? First you have to perform vertical, first you have to perform horizontal, next is vertical. Now let's go back to the theory, which we have to catch up. So steel weld and hardness above certain maximum may be susceptible to cracking, either during the fabrication, in service and welding procedure qualification testing. तो अगर हार्डनेस इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक वेल्डिंग इंजीनियर ने अपने पीक्यूआर में ये सोच के वो पीक्यूआर बनाता है कि ये मटेरियल इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए आप देखा रहेगा पीडब्ल्यूएसटी के बाद यूजुअली हम लोग हार्डनेस चेक करता है क्योंकि हम चाहता है कि मटेरियल स्ट्रेस रिलीव हो. स्ट्रेस रिलीविंग के बाद उसका हार्डनेस मैच करना चाहिए पेरेंट मटेरियल का हार्डनेस के साथ. तो यही है वेल्डिंग करने के टाइम पे हार्डनेस कभी कभी बढ़ जाता है अगर आपने बराबर से स्टेप्स नहीं लिया हो तो. जो हीटिंग और कूलिंग होते समय सडन कूलिंग हो गया तो हार्डनेस बढ़ जाता है, जो हमको नहीं चाहिए क्योंकि हार्डनेस अगर बहुत हार्ड रहेगा तो बाद में इन सर्विस जाके वो फेल होगा. तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्रैक प्रोन हो जाएगा. मतलब अगर बहुत हार्ड होगा तो बाद में 1-2 साल के बाद वहाँ से क्रैक होने का चांस स्टार्ट होने का. तो स्पेसिमेन प्रिपेयर्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग हार्डनेस. मैंने आपको यही बोल दिया है. और 3 मेथड है हार्डनेस चेक करने के लिए, विकर्स, रॉकवेल एंड ब्रिनेल. ये तीनों अपना अपना साइंटिस्ट अपना जो मशीन उसने इन्वेंट किया उसके हिसाब से. तो विकर्स क्या करता है, डायमंड पिरामिड इंडेंटर यूज करता है. इंडेंटर मीन्स उससे जिसके साथ आप डेंट बना सके. रॉकवेल यूजेस अ डायमंड कोन इंडेंटर और स्टील बॉल. ब्रिनेल यूजेस अ बॉल इंडेंटर. सो जिधर भी स्टील बॉल इंडेंटर आता है वो यूजुअली टंगस्टन मटेरियल का रहेगा. The hardness value is given in the size of indentation produced under a standard load. So जितना load आप डालेगा उतना वो hardness बनाएगा. Let's see in the video how it is done. So you will see this is the main thing. At the tip is the diamond, and when it comes down at the load of 10 kg or depending on how much you have given, it will make a dent in the material. So if this material is soft, then it will make more dent. If it is material is hard, it will make less dent, and based on that only the results are given. So let's see how it is taken. So it is taken in the parent material, little bit on the has area and in the capping area, then also in the root side it is taken, so that we will have a breadth of knowledge. So let's see how it is, how to see whether how it is. सिर्फ आप कभी कभी हार्डनेस वैल्यू देख के पता चल जाता है कि कौन सा मेथड यूज किया है. सो 240 HV10 का मतलब क्या है, 240 हार्डनेस है और HV10 मतलब ये विकर्स हार्डनेस है और 10 इज द 10 kg लोड यूज किया गया है. तो आपको ये CSWIP क्वेश्चन में जरूर आ सकता है कि ये आपको सिर्फ वैल्यू देके बोलेगा कौन सा टेस्ट किया है, तो आपको पता होना चाहिए. ये 3 आप देखेगा तो आपको पता चलेगा, याद रखना जरूरी है. 22 HRC का क्या मतलब है, हार्डनेस 22 है और ये रॉकवेल मेथड से किया. तो ये आपको R, ये V और ये B आपको पता चल जाएगा कौन सा टेस्ट है. और ब्रिनेल में हार्डनेस 238 हार्डनेस है, ब्रिनेल टेस्ट है, और ये W इसका टंगस्टन बॉल इंडेंटर का ये दर्शाता है. So I hope it's okay. So let's look at 4.15 crack tip opening displacement testing. So ये भी एक टाइप ऑफ टेस्ट है जैसे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहा जा सकता है.
And this test, they will do only if, for example, in certain very critical applications, for example, where you want to minimize or you want to remove the PWST from the scope, then CTOD, if you are doing the test, then it will mimic the same conditions as PWST. So, for example, for this, the material which you have bought in the mill is supposed to be CTOD tested, and the consumable, welding consumable that you are using also is supposed to be CTOD tested. Only then you can use both of these and make a coupon and send for the CTOD test. So CTOD test is actually very expensive test, and it is done it's not done like a normal PQR test. In the normal PQR testing requirements, CTOD is usually not done. Usually CTOD is done as a separate test because the specimen requires, and also not all the labs are doing the tests. In UAE, for example, there is only one lab which is doing it in Abu Dhabi, or we have to send the sample to Singapore, or maybe India. In India, anybody is doing it. I don't know. Please let me know in the comment box. So CTOD is the same test as Charpy test, but in this we are finding the fracture toughness. So not only toughness, but fracture toughness is found by this test. So Charpy V0 test enables engineers to make judgments about the risk of brittle fracture occurring in steel, but CTOD test measures the material property. So fracture toughness, which is in a long run, how the material will behave, that we will know by CTOD test. So fracture toughness data enables engineer to carry out fracture mechanics analysis, such as calculating the size of crack that would initiate in a brittle fracture under certain stress conditions at a particular temperature. The stress that would be caused by certain size crack to give brittle fracture at a particular temperature. So, for example, in fracture toughness test like CTOD, what they are doing is they are trying to start a crack, and then they will monitor this crack over a period of time, like 1 day, 2 days, and there will be 24 hours, or during that time how the crack will develop and propagate. We usually see that in the brittle material, the crack will quickly start to propagate and break the material. Whereas under the constant load and stress, if the material is having good properties, good sound toughness, then the material will take time to initiate the crack. So naturally, let's see this, how it is done. So the data is essentially making a appropriate decision when the crack is discovered during the inspection of equipment that is in service. So you will know a lot of, if you do the CTOD test, you will know how the material will behave during the service conditions. So during that time, a fracture, if there is, you can also predict when the fracture will happen in this material. So these kind of tests are long-term quantitative tests. So CTOD specimen is prepared as a rectangular or a square-shaped bar cut, transfers to the axis, just like you did the tensile, it is also cut, transfers to the axis of butt weld. A V notch is machined at the center of the bar, which will coincide the test position. So देखते हैं इसका कैसा दिखता है specimen. So ये specimen थोड़ा बड़ा रहता है. The specimen will be little bit bigger. You can see that when there is a notch here, and if you put load here and here, naturally, sorry, on the other side, here and here, naturally the crack will start propagating in the material. So that is what is seen in this. So the specimen is relatively large, typically cross section B and 2B, which is thickness and 2 times the thickness in the length. The test specimen details are shown below. So 2 times thickness रहता है इसका, क्योंकि 1 time thickness तो इसको वो V notch और वो थोड़ा सा crack initiation के लिए लगता है. So how is it done? So you can see here in this drawing. So when the V notch is created here, the stress, if it is applied from here, this opening will start to, and there is a former here, bottom former, जो basically एक U curve shape का steel रहता है. तो जब आप यहाँ पे apply करेगा force, तो naturally ये open होने का chance है या टूटने का chance है. और ये दोनों bevel के लिए एक clip gauge होता है. This clip gauge will be attached to, this will be taking into the computer, and it will, as the opening will increase, this gauge will
read into the computer as increase in the length. So CTOD specimen usually tested at temperature below the ambient, and specimen temperature is controlled by immersion in a bath of liquid cooled to the required test temperature. So again, you can either use liquid nitrogen or suitable measure to bring it to the test temperature. Load is applied to the specimen to cause bending and induce a concentrated stress at the tip of the crack. So यहाँ पे उसको stress दिया जाता है. Attached to the specimen across the mouth of the machined notch. ये machined notch है V shape, giving a reading increasing in the width of the crack mouth as the load is gradually increased. For each test conditions, position of notch and test temperature, it is usually carry out this temperature. So the बहुत सारे आप इसको ambient temperature पे कर सकता है, relatively lesser temperature पे भी कर सकता है, depends on the service and design temperature. And as you can see, the clip gauge is attached here. This is a very micro photograph of that. There are this accurately positioned knife edges. There the clip is attached and that is reading, and then the crack, if it is increased, then this length will increase, and this increase is what we need. So fracture toughness is expressed as distance the crack tip opens without initiation of a brittle crack. तो ये जो क्रैक बढ़ते जाएगा वो ब्रिटल नहीं होना चाहिए. So उसके हिसाब से हम लोग वो लेंथ को, अगर ये ब्रिटल होगा तो ये लेंथ जो इंक्रीज होगा इन दोनों के बीच में वो बहुत जल्दी होगा, नहीं तो फिर वो बहुत टाइम लगाएगा. So what is the acceptance criteria? So as per the client may specify minimum CTOD value. तो क्लाइंट अपना स्पेसिफिकेशन में ऑलरेडी लिखता है कि इतना हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, एंड टेस्ट में भी इंफॉर्मेशन सो दैट value can be used for engineering critical assessment. So after this report is issued, it goes to engineering and they will do the engineering critical assessment. A very tough steel weldment will allow the mouth of the crack to open widely by ductile tearing at the tip of the crack. जैसा मैंने आपको बताया कि ये अगर ब्रिटल है तो ये ओपन ज़्यादा होगा और बहुत जल्दी होगा, तो ये टाइम का भी मामला है. So CTOD values are expressed in millimeters. Typical value might be 0.1 millimeter. ब्रिटल बिहेवियर से वो ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा और अप टू 1 mm चला जाएगा, तो वो वेरी टफ बिहेवियर हो गया. So bend testing. So bend test routinely taken from welding. So let's go to the bend testing. This is the next test. और ये बेंड टेस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट है. सो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि क्वालिटेटिव कौन सा है, क्वांटिटेटिव कौन सा है. सो इसमें आपको बहुत ही क्लियर होना है, जिसमें वैल्यूज मिलता है वो क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है. तो देखो मेरा भी ये हो गया. तो क्योंकि ये वर्ड इतना क्लोज है कि आप मिस्टेक कर सकता है. क्वांटिटी मेजर करता है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट, और क्वालिटी मतलब जिसमें सिर्फ हमको बाय विजुअल इंस्पेक्शन देखना है उसको हम लोग क्वालिटेटिवली बोलेगा. तो बेंड टेस्ट कभी करता है अभी फॉर एग्जांपल वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए किया जाता है. नाउ दीज डेज Aramco from 2018 onwards has the requirement of doing bend test. So the welder has to pass the RT also, and his specimen is sent to the lab for destructive testing. So in that they will take the face root side bend, longitudinal bend, and then they will bend it and they will see qualitatively whether there is any flaw or if there is any crack or something like that. Then the welder gets passed. So face bend क्या है, root bend क्या है, इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर जाता है. तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का फेस है और नीचे रूट है, तो अगर आपने इसको फेस से बेंड किया तो रूट ओपन हो जाएगा, बिकॉज ये 180 डिग्रीज के लिए टर्न करता है. जब अभी ये आप इधर से ऊपर से प्रेशर डालेगा तो ये नीचे चला जाएगा और पूरा रूट एक्सपोज हो जाएगा. सेम वे अगर आप रूट के साइड से प्रेशर कर रहा है तो फेस एक्सपोज होके फेस बेंड हो जाएगा 180 डिग्रीज. तो वो आपको नजर आएगा कि उसमें कुछ फ्लॉ है या नहीं है, या कोई रिपेयर है या ऐसा कुछ. सेम वे साइड बेंड भी, ये जो साइड है इसको पूरा 180 डिग्री बेंड कर देता है. वो लोग अपोजिट साइड से दे विल गिव द लोड एंड देन दे विल बेंड इट. सो गाइड बेंड टेस्ट्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर वेल्डिंग प्रोसीजर एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन. मैंने जैसा आपको बोला कि ये दोनों सिनेरियो में ये होता है. So guide bend means that the strain imposed on the specimen is uniformly controlled being bent around the former
विथ अ सर्टेन डायमीटर। तो ये जो ये है, ये इसको फॉर्मर बोलता है, जिस पे ए लिखा हुआ है, और इसका जो डायमीटर है, ये जो इसका जो कर्वेचर है, ये आपका ये जो मटेरियल है इसका थिकनेस पे निर्धारित होता है। तो diameter of the former used for a particular test is specified in the code, having been determined by the type of material being tested and ductility that can be expected from the welding and any PWST. So the diameter is decided by the code. Usually we are seeing the specimen thickness is usually expressed in multiple of the specimen thickness. So usually it is typically 4T, but for material that have lower tensile and ductility, radius of the former may be 10 times thickness also. Also the standard specifies the method कि 120 डिग्री बेंड करना है या 180 डिग्री बेंड करना है। और एक्सेप्टेंस क्या होगा, इसमें अगर कोई स्मॉल इंडिकेशन आएगा लाइक 3 mm के नीचे तो एक्सेप्टेबल है, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका 5-6 mm का कोई स्लैग निकल गया, हो सकता है इसमें आ जाता है वो स्लैग, अगर रहेगा तो यूजुअली आपको ये आरटी में ये स्लैग एक्सेप्टेबल होगा। बट आपका अगर लक खराब हुआ, वहाँ से जो सैंपल लिया है वहीं पे वो अगर होगा तो आप वो रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्हाट आर फ्रैक्चर टेस्ट्स। फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट भी होता है और निक ब्रेक, मतलब आपको अगर आरटी नहीं करना है या किसी वजह से आरटी को इसको आपको नहीं करना है तो बट जॉइंट को आप दोनों तरह से ग्राइंड करके इसको आप बेंड करके निक ब्रेक भी कर सकता है। निक मतलब वो नॉच क्रिएट करता है और वो नॉच को निक बोलता है और वही बेंड टेस्ट है। So the quality soundness, ये भी एक qualitative test है। So quality soundness of the fillet weld can be assessed by fracturing test piece and examining the fracture। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें स्पेसिमेन को किस तरह बनाता है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये फिलेट जॉइंट है, ये फिलेट जॉइंट के बाद एक ग्राइंडर से या किसी सॉ से इसको आप कट कर सकते हैं इस तरह से, और बाद में इसको आप अगर जिग में रख के इसको यहाँ से हैमर मारेगा तो ये टूटेगा वहाँ से। तो नेचुरली उसको ये कितना टूटता है, और इसमें कुछ अगर फ्लॉ है तो ये फटाफट एकदम झटके से टूट जाएगा। और ये भी एक तरीका है, इसको 2 प्रेस में रख के आप प्रेस भी कर सकता है। सो एक्सेप्टेंस क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड ऑफ द वेल्डर क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन स्टैंडर्ड विल स्पेसिफाई द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये तो स्टैंडर्ड में जरूर दिया है। फॉर इम्परफेक्शन सच एज लैक ऑफ पेनिट्रेशन एंड रूट ऑफ द जॉइंट एंड सॉलिड इंक्लूजन एंड पोरोसिटी। तो अगर ये सब होगा तो उसमें एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड में दिया होगा कि कितना एक्सेप्टेबल है एंड ऑल दैट। सो टेस्ट रिपोर्ट शुड गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ अपीयरेंस ऑफ फ्रैक्चर, तो लोकेशन एंड एनी इम्परफेक्शन। सो इसका बाकायदा फोटोग्राफ वगैरह निकालना चाहिए, अगर ये फेल हुआ तो पास हुआ तो भी फोटोग्राफ निकाल के रखना चाहिए। सो निक ब्रेक क्या है, निक ब्रेक में अगर आपको आरटी नहीं करना है ये स्पेसिमेन का तो आप निक ब्रेक कर सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक बट जॉइंट का दोनों साइड से इसको ये नॉच बनाता है और बाद में इसको बेंड करता है। तो बेंड करने के बाद ये नॉच टूटता है, तो अगर इसमें कोई फ्लॉ रहेगा तो ये बहुत जल्दी टूटेगा और इसमें वैल्यूज भी अच्छा नहीं आएगा। और बाद में इसमें आपको इस वैसे भी आपको इसमें वैल्यू का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। और आपको नज़र आएगा अगर पोरोसिटी है या स्लैग है वहाँ से वो टूट गया तो जल्दी टूट जाएगा। So the acceptance standard is the standard for the welder qualification or application standard will specify the acceptance criteria for imperfections such as lack of fusion, solid inclusion या कुछ porosity होगा तो वो नजर आ जाएगा। फिर देखते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मैंने आपको कहा कि मैक्रोस्कोपी का जब सैंपल बनता है तो उसमें हार्डनेस भी कवर हो जाता है, क्योंकि वही सैंपल यूज करके आप हार्डनेस भी कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपी का एकदम पॉलिश सरफेस पे इसको बनाया जाता है और बाद में ये मैक्रोस्कोपी का फॉर एग्जांपल आपको सैंपल देखना है तो यहीं पे कहीं कवर हो गया है, वो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखता है। ये दिखता है, ये है मैक्रोस्कोपी का सैंपल। तो इस तरह से ये एकदम फाइन एकदम पॉलिश्ड रहेगा सरफेस, और ये आपको वेल्ड का पूरा नज़ारा दिखेगा इसमें। and then you can see the perfect welding of this, how many passes you have made, or everything can be seen very clearly. So this is also qualitative test. This also we will see and record the results. Let me go to the macro graph. Okay, transverse section from butt and fillet joint are required by EWS to WP during the PQR testing and may be required for some welder qualification also. So this is considered in detail in separate section of the course notes.
मैक्रोस्कोपी के लिए एक सेपरेट सेक्शन है, वहीं पे आपको ये नज़र आएगा। मैं आपको इसका लिंक भी मतलब जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो आई विल टेल यू वेयर वी हैव कवर्ड दिस। So let's see the standards behind all these. So EWS जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए बहुत सारा स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व है जो हर एक लैब में होना चाहिए, और हर एक लैब में आप जाएगा तो उसको बोलना चाहिए मेरे को लेटेस्ट दिखाओ, लेटेस्ट स्टैंडर्ड। सो 9016 जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग इन मेटालिक मटेरियल्स, इम्पैक्ट टेस्ट एंड टेस्ट स्पेसिमेन लोकेशन, नॉच ओरिएंटेशन, ये सब वो स्टैंडर्ड में दिया गया है कि कहाँ इम्पैक्ट टेस्ट करना है, स्पेसिमेन लोकेशन कहाँ से लेना है, नॉच कैसे बनाना है, क्या उसका डायमीटर, उसका डायमेंशन क्या होगा। सो ये उसके बारे में डील करता है। सो 4136 जो स्टैंडर्ड है वो मेटालिक मटेरियल जो ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था, वो इसका स्टैंडर्ड है। फिर 5173 प्लस A1 ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ वेल्ड मेटालिक मटेरियल बेंड टेस्ट, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड देखता है। फिर 17637 ये टेस्ट ये है मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। और 6892-1 6892-2 ये दो टेंसाइल टेस्टिंग के लिए है, जो पहला वाला तो एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए है और दूसरा वाला एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए जो टेंसाइल टेस्ट है उसके लिए है। सो ये जो स्टैंडर्ड है इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। यहीं पे आप ये पूरा स्लाइड्स देख सकते हैं जो हम लोग ने हमारे टॉक्स के इसमें कवर किया, स्पेशली जो इसका डेफिनेशंस है। ये आप ये स्लाइड आपके एग्ज़ाम से पहले तो आपको अच्छे तरह से मेमोरी में याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा, क्योंकि एग्ज़ाम डे में आपका टाइम कम रहता है। आपको अगर कोर्स के बाद अगर आपको क्विक समराइज करना है तो ये स्लाइड्स आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जो हम लोग ने ये सब कवर किया इसी के बारे में ये स्लाइड्स है। इन शॉर्ट है ये, जस्ट टू मेक योर मेमोरी वेक अप। सो ये भी आपको हेल्प होगा। सो जैसा हम लोग ने ये कोर्स में कवर किया, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपका सब क्वेश्चन आंसर करेगा इंडिविजुअली। एंड प्रिपेयर योर एग्ज़ाम प्रॉपरली। बेस्ट ऑफ लक। एंड हम लोग एक सेपरेट सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, तो उसमें आपको क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। So thank you very much. Keep watching QHSC concepts so that your concepts will be clear, and then you can give an exam which is, you will come out bright. So I hope that our materials will help you during preparation of your course. Thank you very much.
engineer.
Folks, what happens when the welding engineer
Folks, what happens when the welding engineer